गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम अमायरा है। आज अमायरा लेकर आ गई है आप सभी के लिए फिर से एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसका नाम है क्रिसुमी वाटरफॉल रेसिडेंस। जी हाँ, मैं आपको एक एक करके इस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगी, लेकिन पहले थोड़ा सा प्रोजेक्ट के नाम को लेके जानते हैं कि प्रोजेक्ट का नाम क्रिसुमी क्यों है। तो मैं आपको बताती हूँ, क्रिसुमी जो है वो दो कंपनीज का कोलैबोरेशन है। पहली कंपनी जापान की है एंड जो दूसरी है वो इंडियन कंपनी है। तो जापान की कंपनी जो है वो है सुमिटोमो कॉर्पोरेशन एंड हमारी इंडियन कंपनी है कृष्णा ग्रुप। ये दो कंपनीज को लेके कोलैबोरेट किया गया है, जो कि क्रिसुमी वाटरफॉल रेसिडेंस नाम दिया गया है इस प्रोजेक्ट का। चलिए मैं बात करती हूँ ये प्रोजेक्ट सिचुएटेड कहाँ है। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो सिचुएटेड है द्वारका एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 36A। हाँ जी, वहाँ से कनेक्टिविटी की बात करें तो स्मूथ कनेक्टिविटी रहेगी हमारे NH8 की एंड SPR रोड की। अब एक एक करके मैं आपको थोड़ा थोड़ा इस प्रोजेक्ट के बारे में बताती हूँ। इसके लिए आप ये वीडियो छोड़ के जाइएगा मत, इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा हमारे साथ। तो मैं बात कर रही थी कि प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट क्रिसुमी वाटरफॉल रेसिडेंस जो है इसका पूरा लैंड बैंक 65 एकर्स का है। प्रोजेक्ट में हम दो टावर लेके आ रहे हैं 5.4 एकर्स में। ये इंडो जापानीज प्रोजेक्ट जो है इसमें हमने वर्ल्ड के नंबर 2 पे जो आर्किटेक्चर आते हैं जिनका नाम है निकेन सिक्की, उन्हें हमने हायर किया है। हमारा ये जो क्रिसुमी वाटरफॉल रेसिडेंस है इस प्रोजेक्ट को डिजाइन करने वाले आर्किटेक्चर निकेन सिक्की हैं, जो अगर इंडिया की बात की जाए तो वो नंबर 1 पे आते हैं एंड पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो वो नंबर 2 पे आते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ स्पेसिफिकेशंस हमारे अपार्टमेंट्स को लेके या फिर यूएसपीज क्या है, ये सारी चीजें। यूएसपीज आपको नॉर्मल रहेंगी सारी, बट लग्जरियस तो रहेंगी। एमिनिटीज अल्ट्रा लग्जरी एमिनिटीज होंगी। जैसे कि क्लब हाउस की बात करें तो क्लब हाउस इसमें आपको 36,000 स्क्वायर फीट का मिलेगा, जिसमें आपका बार, लॉन्ज, रेस्टोरेंट एंड ईच एंड एवरीथिंग जो एक प्रोजेक्ट में लग्जरियस दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें आपको जो स्विमिंग पूल मिल रहा है वो ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल मिल रहा है। हाँ जी, क्योंकि बाकी प्रोजेक्ट्स में हमने देखा है कि अडल्ट के लिए और किड्स के लिए दो सेपरेट देते हैं, बट आपको इसमें स्विमिंग पूल जो है ओलंपिक साइज का मिल रहा है। अब बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें दी गई हैं। यहाँ पे आपको एक जेन गार्डन दिया गया है, जो गार्डन फुल्ली जापानीज स्टाइल का होगा। जी हाँ, वो जापानीज के जो कंपनी है हमारी सुमिटोमो कॉर्पोरेशन, उन्होंने उनके वहाँ के एक स्टाइल को गार्डन में दिखाया हुआ है कि किस तरीके से उनके यहाँ पे जापानीज गार्डन हुआ करते हैं। अब मैं आपको यूनिट की एक बेस्ट टू बेस्ट स्पेसिफिकेशन बताती हूँ, जो कि आज के डेट में थोड़ी सी प्राइवेसी में आ जाती है। जैसे कि आपका अपार्टमेंट है, कोई भी अपार्टमेंट इस प्रोजेक्ट में फेस टू फेस नहीं होंगे। इसका मतलब लाइक अगर आपका अपार्टमेंट ये है तो दूसरे अपार्टमेंट को ये कभी भी फेस नहीं करेगा इसका मेन डोर। इन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि इनका जो लाइक मेन डोर है वो किसी भी दूसरे अपार्टमेंट के मेन डोर से कनेक्ट नहीं करेगा, फेस टू फेस नहीं करेगा। ये थोड़ी सी प्राइवेसी में आ जाती है। अब पूरे अपार्टमेंट में आपको वुडन फ्लोरिंग मिलेगी। जी हाँ, लाइक लिविंग रूम से स्टार्ट करके एंड तक आपको वुडन फ्लोरिंग मिलेगी। एंड वन मोर थिंग, अगर इसका नाम वाटरफॉल रेसिडेंस है तो वाटरफॉल के रिलेटेड भी तो कुछ होना चाहिए ना। हाँ जी, बिल्कुल वाटरफॉल से रिलेटेड भी है। इनकेस जैसे बारिश होती है ना, तो जब बारिश होगी ना इस टावर पे किसी पे भी गिरेगा तो आपको ऐसा फील होगा कि ऊपर से कोई वाटर ड्रॉपलेट्स ऐसे गिर रहे हैं, आपको वाटरफॉल वाली फीलिंग आएगी। इसके एंट्रांस से शुरू करेंगे तो एंट्रांस में भी आपको वाटरफॉल ऊपर रहेगा एंड आप नीचे से एंट्रांस गेट होगा, आपको ऊपर से ऐसा लगेगा कि वाटरफॉल के नीचे हो आप। जैसे हम कई नेचर से रिलेटेड जाते हैं वाटरफॉल देखने के लिए, वहां पे आपको जिस तरीके से फील होता है ना कि वाटरफॉल है, वाटरफॉल के नीचे हम एग्जैक्टली इस हमारे क्रिसुमी वाटरफॉल रेसिडेंस में आपको वही वाली फीलिंग आएगी। अगर आप अपने अपार्टमेंट से विंडो से लाइक या फिर बालकनी से बाहर खड़े होकर देखेंगे एंड रेनी सीजन होगा तो आपको लगेगा कि आप किसी वाटरफॉल के अंदर है। चलिए अब एक एक करके हम ये चीजें जो है हमारे छोटे से वीडियो में देखते हैं। बने रहिएगा, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आपको अगर मैंने कुछ ना बताया हो तो आपको वीडियो में क्लियर हो जाएगा।
Water is nature's gift to mankind. The precious element of life. The source of peace, tranquility. Water, refreshing. Revered and worshipped. A divine inspiration for sophisticated living. Waterfall residences. KRISUMI grandeur the moment you step in. Designed very much like the reception lobby, the entrance lobby of Tower A and B comes with a double height ceiling, while Tower C comes with a triple height ceiling. Color, aesthetics or detailing, it's all going to set your expectations higher. Experience how the benchmark gets elevated the minute you step in. While the ground floor lobby boasts of a stunning double height ceiling, the lift lobby on each floor is centrally air conditioned by Daikin, and it's a KRISUMI promise that you will find similar woodwork, metal panels and ambient lighting on site at ground floor. On other floors, you will have laminate cladding and
paint with tile. Even the doors at waterfall residences stand tall like the elevation. The entrance door is approximately 8 feet high and is built of special veneer wood, which is fireproof for 2 hours. God is in the details. Your living and dining area at Waterfall Residences is a testimony to that. It measures 12 feet 5.5 inches by 23 feet 4 3/4 inches. To ensure your wooden floor stays good as new, it's been made water resistant as well as termite resistant. The actual apartment comes with plain white walls, so you can. The kitchen has been designed keeping both the chef and the host and you in mind, which is why it's available in closed as well as open format. The latter comes with a built-in bar counter, while the storage cabinets, hob and chimney are a standard feature. As a mark of KRISUMI excellence, this 10 feet by 7.6 feet kitchen comes with leather-furnished granite slabs in. The kitchen is the heart of your home, so the balcony that comes attached must fill this heart with all the joy and positivity. The glass door ensures just that, while the flooring with anti-skid tiles and super sturdy and durable MS railing add to the safety as well as style. The walls and ceiling come with an exterior paint that blends with the facade of the elevation. Welcome to the most work-friendly home. Stop using your dining table as your work desk and enjoy working in a well-equipped 10 feet by 12 feet personal workspace that comes with every facility you can expect from a corner cabin. Television, air purifier, printer, paper shredder, vacuum cleaner, coffee maker, toaster, table and chairs, storage space, and even lights and. It's a view only a few people get to enjoy every morning. That too, from a 47 feet long and 5 feet 10 3/4 inches wide balcony. Accessible through all the rooms, the balcony adorns anti-skid tiles, stainless steel railings with double lead laminated and toughened glass panels, adding not just to the beauty of the facade, but providing plain walls that reflect your light and positivity, laminated wooden flooring for an elegant look, and access to the balcony for you to soak in the grandeur. You have it all. The size of this room is 10 feet by 12 feet. Well, master bedroom or second bedroom, you deserve nothing less than the best. So, all the bathrooms at KRISUMI Waterfall Residences come with CP fittings from Groha, while the sanitary ware is from Toto. To enhance the experience further, you may opt for the glass partition as shown, the woodwork below the wash basin counter, and the storage space with the mirror. It's your room, and we know you settle for excellence. 11 feet by 15.634 inches in size. It's quite large in numbers and even larger in appearance. There is a huge cavity already provided in the wall for storage. The flooring is of laminated wood, but what makes it even more stunning is the additional window that opens up to. Equally luxurious, even more spacious, that's your master bathroom. Measuring 7 feet 34 inches by 7 feet 6 inches. It may take you some time to soak in the grandeur. थैंक यू सो मच हमारे वीडियो को वॉच
वॉच करने के लिए एंड लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। एंड इसी तरीके के जैसे आज मैंने आपको क्रिसुमी वाटरफॉल रेसिडेंस के बारे में बताया, अपकमिंग वीडियोस में बहुत अच्छी लेके आने वाली हूँ, हमारे वीडियो में बने रहिएगा। एंड अगर आपको इस प्रोजेक्ट को लेके किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरीज हो, कुछ भी क्लैरिफिकेशन करना हो, आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल श्योर करिए एंड बेझिझक होकर कॉल करिए, क्योंकि ये हमारा क्रिसुमी वाटरफॉल रेसिडेंस जो है इंडो जापानीज प्रोजेक्ट है ये, एंड इसमें आपको बहुत अच्छे स्टाइल की चीज़ें मिलने वाली हैं, चाहे वो एमिनिटीज़ की हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। एक डिफरेंट लाइफस्टाइल को ये आपका मेंटेन करेगा कि हमें लगता है ना कि हम इंडिया में हैं, तो आपको जापान वाली फीलिंग है कि जापान के लोग कैसे हैं। और इन्होंने ना अपना जो लॉबी होता है वहाँ पे बहुत अच्छी जापान वाली स्टाइल दी हुई है। तो आप एक बार ज़रूर आइए, हमारे इस प्रोजेक्ट को विजिट करिए एंड आपको श्योर पता लगेगा कि हाँ सच में ही ये जापान वाली फीलिंग आ गई हमें इंडिया में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अमायरा एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।